All right, T, we are live. Hello. Good evening and welcome back to another session of the Hindu analysis and, of course, to the Law Entrance YouTube channel. I hope I am audible, visible clearly to all of you. Very good evening. Let me just quickly share my PPT with you all. Okay. Wait a moment. Where is the PPT? Here is the PPT. Ta-da-da-da. Ting, 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 ting. Okay, good evening, folks. How are you guys doing? Welcome back to another week, another class. It's Monday evening, start to a new week. Advija is here, Riva is here, Gojo is here, Aradhya is here, Kushagra is here, Gopinath is here, Siddhi is here, Gyan is here, Pranshi is here, Chandralekha is here. All right, good evening, folks. Welcome to the class. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. आज है मंडे, कल है ट्यूसडे, यानी कि कल होगा मेंटी क्विज. कल का मेंटी क्विज इज ऑन करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ठीक है, आई होप यू गाइस हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग एंड इफ यू हैव नॉट, नाउ इज द टाइम. प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. कल हम उस पर क्विज करेंगे 15 to 20 और क्वेश्चंस एंड उसको इजी रखेंगे, इजी टू मॉडरेट ही रखेंगे. क्विज का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखेंगे. सो या, कम प्रिपेयर्ड एंड यू विल एंजॉय द क्विज. ओके, आज के एजेंडा की बात करें तो वी हैव 3 important piece of articles. First is regarding the headline news, the Stampede, which happened. Where does it happen? Where has it happened? Does it happen? क्या होता है? Where has it happened? जल्दी से मुझे बताओ कहाँ पे हुई है ये Stampede जिसकी हम बात कर रहे हैं. The next 2 are editorial articles. One is regarding Russia and Taliban. One is again regarding the Bihar intensive revision and citizenship. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे आर्टिकल, तो मैंने कहा चलो फिर से एक बार डिस्कस कर लिया जाए. And then of course we'll have vocabulary for the day. There are 2-3 other articles. One is around glacial lakes. Another one is around Israel Palestine. तो ठीक है, वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे. But yeah, these are the 3 important ones which we're going to discuss today. And yeah, let's start. Also, we have started this subjective section schedule वाली series जो last week से start हो चुकी है, which means this week, starting today, is the second week of this series. Make sure you guys come regularly to these classes, as regular as possible and in as big numbers as possible. मैंने देखा था last week मेरी logical reasoning की class में there were 10 to 15 odd students. Hindu analysis में आते हो, you guys are 35 to 40 number here, which I really appreciate. A lot of gratitude for that. But please try to show up for the 5:30 class. I know it's tough for you guys. It clashes with a lot of other engagements. But at least try to watch it later if you're not able to come live. Okay? That's just a request from my end. And not just my class, I'm requesting this for all the other subjects. Okay? So please do that. It's for your benefit only. इसमें like extra practice ही है आपके लिए. Nothing to lose, only win-win. Okay, चलो start करते हैं आज का discussion. Let's look at the newspaper for the day, guys. I'll quickly share it with you all on the screen. Tick, 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 tick. And she's saying, will you also take legal sessions in the upcoming days? अगर आयुषी मैम मुझे allow करेंगी तो मैं जरूर ले लूँगा. I don't mind taking it. But abhi I have no such instructions. Whenever I have instructions from the head office or from Ayushi ma'am or from any of my superiors, I'm happy to take it. I don't mind. Okay, yes, Mansa Devi Haridwar, the temple. That's Hemlata is saying खाना खा लिया. ये तो क्लास के एंड में पूछा जाता है. अभी थोड़ी इतना जल्दी खाना नहीं खाता हूँ मैं. I usually have my dinner around 10. But yeah, good to have you here. Yes, Mansa Devi Haridwar is the temple we are talking about, and it's really tragic, of course. A lot of tragedies happening this year. As we were discussing, we discuss this in every class कि हर दिन हर Hindu analysis में कुछ ना कुछ tragic news होती है. Someone passes away, or you know, some brutal incident, some fire, some bomb blast, some terrorist attack. All of these things. Just 2025. I think by far has been the most tragic year which I have witnessed in terms of number of incidents. इससे ज़्यादा मैंने नहीं सुने हैं. Maybe it's recency bias, maybe it's confirmation bias, I don't know. But yeah, it's quite intense. Kushagra is saying Delhi में NLU, Delhi के अलावा any good law schools? I think जो main campus है IPU का, I think it's called USLLS, something like that. I think that's a decent college.
उसके अलावा दिल्ली में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं? आईपी यूनिवर्सिटी के 2-3 और कॉलेजेस हैं विच आर ओकेश। रेस्ट तो आई कैन नॉट रियली थिंक ऑफ एनी सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आप जिंदल को एनसीआर में कंसिडर करते हैं तो जिंदल इज अ गुड कॉलेज, बट या इट्स एक्सपेंसिव, सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर आर एनी रेप्यूटेड कॉलेजेस। एसएलएस नोएडा है, बट अगेन आई वोंट रेट इट वेरी हाई इन माय लिस्ट। एमिटी अच्छा है कि नहीं है? मतलब ठीक है, आई मीन इट्स ओके, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज एंड या आप मस्ती करने जाना है आपको 5 साल तो अच्छा है, बट इफ यू वांट to actually study, then maybe you can look at other options. I would not keep it very high in my priority list. But ठीक है, Kujag is saying it is what it is, death is inevitable. Wow, काफी nihilistic tendencies. But yeah, Rishit is saying CLAT crack nahi karta as an aspirant in corporate law. If I go to study business, is it a bad option with my legal? No, no option is a bad option. Matlab, unless you go to Amity. Just kidding. But yeah, business is an absolutely wonderful stream to join. I mean, in retrospect, probably I personally should have gone for a BBA, MBA. But okay, law gave me an edge. Law gave me a lot of learnings. But anyway, yeah, all of these are good career options. NLU Bangalore General, we should get a rank below 100. Yes, absolutely correct. Rank below 100 would be a safe shot. ओके, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो आप लोग मुझे। हमें न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है। दिस इज द न्यूज़पेपर फॉर द डे। 8 killed in stampede at a temple in Haridwar. Which temple we are talking about? The Mansa Devi temple. And 8 people have been killed, 30 have been injured. This temple is in Uttarakhand. Haridwar is in Uttarakhand, we all know that. And क्यों हुआ ये stampede? There was a panic which was created due to an afwa, due to a rumor that there is a snapped electric line. एक जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि लाइव नंगी तार, बिजली की तार जो है छूट गई है, एंड उस वजह से पैनिक क्रिएट हो गया। एंड जो स्टेयरवे रूट था टेम्पल का, सीढ़ियों से जो लोग जाते थे वहाँ पे स्पेशली ज़्यादा स्टैम्पीड वाली सिचुएशन हो गई, विच वॉज problematic, and then some people lost their lives. Mostly these people were from UP, Bihar and Uttarakhand. So these people got stuck between different barricades, and कुछ लोग जो है दीवार पे चढ़ रहे थे, कुछ लोग escape कर रहे थे. Many people lost their lives in that fiasco. फिर obviously उसमें पुलिस आ गई, फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आ गई, SDRF जिसको आप कहते हो, एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चला काफी टाइम तक, एंड कॉम्पेंसेशन हैज बीन अनाउंस्ड नाउ। जो सीएम है हमारे उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने अनाउंस किया है 2 लाख टू द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु हैव पास्ड अवे एंड 50,000 टू द पीपल हु हैव बीन इंजर्ड। एंड जो टेम्पल का ट्रस्ट है, मनसा देवी टेम्पल का ट्रस्ट, उन्होंने भी अनाउंस किया 5 लाख फॉर द पीपल हु हैव बीन डिसीज्ड। एंड डिजीज से मेरा मतलब पास अवे वाला, DECE वाला डिजीज वाला, डिजीज नहीं, डिसीज्ड वाला डिजीज, एंड 1 लाख फॉर द इंजर्ड। बाकी फिर अलग अलग नेताओं से रिएक्शन आए हैं, मोदी जी ने अपने कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं, और आगे चल के अब इसमें इंक्वायरी होगी। जो डीएम साहब हैं हरिद्वार के, मयूर दीक्षित, उन्होंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, एंड अब जो है इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर होगी इन द नेक्स्ट 15 odd days. On the right hand side, you see Chola dynasty's legacy provides roadmap for modern India. Chola dynasty कहाँ की dynasty थी? South India की थी. The prominent ruler was राजेंद्र चोला. चोला 1 भी बोलते हैं उनको, ठीक है। And he paid tribute to him. Rajendra Chola 1 and his father Rajendra Chola. ठीक है। He was at this temple, Brihadiswara temple in Aryalur. Alright, cool. आगे चलते हैं हम लोग। India wants SIR stopped, says it has become a tool to establish citizenship. इसी पे हमारा आज का editorial article भी है, which we're gonna discuss very soon. But yeah, basically opposition जो है कह रहा है कि this is an exercise which is excluding people from the democratic process, and इसमें citizenship वाला जो है वो भी fiasco involve हो गया. We'll understand it better when we go to the editorial and discuss that editorial in detail. But abhi ke liye, let's see what are the statements coming in. They're saying that Election Commission is making all kinds of self-regulatory and misleading claims, basically corroborating our apprehension, sort of strengthening our apprehension, says CPIM leader.
I humbly urge the election commission, it's not a matter of political obstinacy. Obstinacy मतलब होता है stubbornness, आप कह सकते हो, or institutional arrogance. Please reconsider it. Everyone is urging you. So basically, opposition is sort of against it. This special intensive revision exercise which is happening, and yeah, they have expressed concerns regarding deletion, that a lot of voters have been deleted from the rolls, and that is again obviously not great for a democracy. ठीक है, मणिपुर टाउन गेट्स अ स्लिवर मतलब छोटी सी उम्मीद कह सकते हो आप, वेरी minute quantity of hope from Myanmar children. So border town ethnic conflict scarred Manipur is seeing a faint revival of activity, and ये जो children who are war affected Myanmar के children, they are sort of bringing normalization to the areas, starting trade and all of those things and creating ethnic harmony. Okay, Maharashtra halts Ladki Bahin aid for 26.34 lakh beneficiaries. They're saying पहले जो है ये वेरिफिकेशन करेंगे, टेम्परली इन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं मंथली पेमेंट्स. ओके, कूल. City-based news is not important for us. We can move ahead. State-based news: respect sentiment, says Stalin as he presses for release of funds as PM arrives in Tamil Nadu. So we have been discussing this time and again that जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं इनके साथ पॉलिसी वाली, लैंग्वेज पॉलिसी वाली डिबेट काफ़ी टाइम से चल रही है, जिस वजह से सेंटर हैज़ नॉट रिलीज्ड अ लॉट ऑफ फंड्स फॉर अ लॉट ऑफ स्कीम्स. तो वही कह रहे हैं, दे आर रेजिंग डिमांड्स इन मेमोरेंडम हैंडेड ओवर टू मोदी जी ड्यूरिंग ऑफिशियल विजिट टू द स्टेट. समग्र शिक्षा फंड्स सॉट विदाउट सेंटर इंसिस्टिंग ऑन स्टेट साइनिंग MOU ऑन द PM श्री स्कीम. ठीक है, तो चलो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको क्या है. फंड्स अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम ensuring safety of Tamil Nadu's fishermen, implementation of railway projects, allocation of land, defense, etc., etc. These were among the demands, and he said that he has given a memorandum to Modi ji, and okay, what else? Requested the immediate release of 2,000 odd crores under the Samagra Shiksha scheme. Okay, demanded the implementation of railway projects in these cities. And also sought more EMUs. EMUs are electrical multiple units. Okay, cool. Basically, they are saying कि भाई पैसे दे दो हमारे, ऐसे मत करो. Raj Thackeray visits Uddhav on birthday amid buzz of a tie-up. So Raj Thackeray, Uddhav Thackeray, we all know that the two Thackeray brothers, cousins, although they don't really get along really well, but happy birthday पे जो है दूरियों को साइड रख के इन्होंने विजिट किया, which is nice. Good for a change. Mahadai Ro, now Bomai condemns Goa CM's statement. Who is Bomai? He was an ex-CM of Karnataka. And full name is Baswaraj Bomai. And he also condemned the statements made by the CM of Goa. Statements regarding the diversion of water from the Mahadai River. So ये हम discuss कर चुके हैं already. Mahadai River वाला case. Won't discuss it again. ठीक है. पॉलिटिक्स ही है मोस्टली यहाँ पे. रिटर्न ऑफ द नेटिव. ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. स्टेट बेस्ड न्यूज: Delhi government's move to amend labor laws will strip lakhs of workers of their rights, say experts. So this is being done as a part of ease of doing business improve करने के लिए. They are making changes to the Delhi Shops and Establishments Act of 1954, जिसमें 10 से ज़्यादा employees वाले establishments को ये impact करता है. And right now, if a person working at a small bakery or garment shop is fired illegally, he or she can file a complaint under the Act. Once the minimum threshold is increased to 10 workers at thousands of establishments with fewer than 10 employees will be placed outside the ambit of the law and left without any protection. तो मतलब समझ आया आप लोगों को? अगर ये चेंज हो जाएगा लॉ में, तो अगर आप किसी ऐसी जगह कोई वर्कर काम करता है जहाँ 10 से कम लोग हैं और उसको इलीगली निकाल दिया जाता है, तो अंडर लॉ उसके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं बचेगा अंडर लेबर लॉ. ठीक है, so that is what is problematic, say these experts. The labor courts could provide protection in cases of wages, but not in illegally firing the workers. They are also planning to amend the Industrial Disputes Act, जो industrial workers को cater करता है, which applies to commercial units across the country. And it's a part of the concurrent list. Concurrent list में both center and state can make the laws. And currently the act provides
protection to workers in event of retrenchment and closure of firms employing 100 workers or more. यानी कि यहाँ पे threshold 100 से ज़्यादा वाला है जो Industrial Dispute Act है. Delhi government is planning to amend this to only establishments employing 300 or more. फिर से ये थोड़ा सा exclusionary हो जाएगा, है ना? तो जो 100 से लेकर 200 तक के employees वाले establishment हैं, factories हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसका? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, जिसमें काफी सारे प्रोटेक्शंस हैं वर्कर्स के लिए. तो ठीक है, ये ज्यादा लेबर लॉ में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आप लोग पढ़ोगे प्रॉबेबली लास्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल में लेबर लॉ पढ़ोगे. लास्ट ईयर या फोर्थ ईयर ऑफ लॉ स्कूल में लेबर लॉ पढ़ाया जाता है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू स्टडी, बट या दैट्स ऑल यू नीड टू नो फॉर नाउ. States liquor scams. SIT is your special investigation team searches properties in Hyderabad. तो इसमें recently arrest भी हुए थे काफी सारे लोग. And K.R. Reddy, one of the 12 accused in the scam, is being produced in court. You can see the picture. Police teams visit office, industrial units, and properties around the city. They are investigating the alleged multi-crore scam. Chandrababu Naidu invites foreign firms to invest in ports and renewables. ठीक है. He's the CM of Andhra Pradesh. Rajasthan to demolish unsafe school buildings. Okay. Killed by wild elephants. Okay. What else? ठीक है, nothing important here. TMC, Trinamool Congress, the party of Mamata Banerjee, is taking out rallies across West Bengal for detention of migrant workers on the suspicion of them being illegal Bangladeshi immigrants. So this primarily happened in Delhi NCR. I don't know how many of you got to know of this or are aware of this development, but a lot of people complained recently that their maids or house help rather, आजकल house help वाला word चलता है. So their house helps stop coming, and suddenly their husbands, the household's husbands, were picked up by the police on the apprehension, on the allegation that they are illegal Bangladeshi migrant workers. So वो काफी controversy चल रही है इस टाइम NCR में, उसी के against ये जो है protest चल रहा है. Detainees let go but drive against illegal immigrants still on, says Gurgaon police. Okay, this is the editorial article, Clearing the Air on Citizenship in Bihar Role Revision. We'll talk about that in detail in our PPT. On the left-hand side, you have the POXO Act. ये हम discuss कर रहे थे 2-3 दिन पहले. Criminalizing adolescent sex will undermine the aim of the POXO Act. So there was this case where the sexual activity was consensuous and still the court charged them under BNS. तो वही यहाँ पे डिस्कस्ड है that if you criminalize this would undermine the whole objective of the Prevention of Children from Sexual Offences Act, which is for protection of children. क्योंकि फिर आगे चल के सभी लोग ये क्लेम करने लगेंगे that it was mutual, it was consensual, and जो consent का उसमें प्रोविजन है कि 18 years से कम पे आप consent नहीं दे सकते हो, वो dilute हो जाएगा थोड़ा. So that is what was raised by senior advocate Indra Jaisingh in her written submission to the Supreme Court, that consensual sex between teenagers must not be criminalized. It's a welcome move. So she argued from the opposite side. She also appointed amicus curiae, that means friend of the court, and her submissions are part of petition filed by advocate Nipun Saxena. Her brief challenged the designation of 18 years as the age of consent and said that it should come down to 16. Okay. She called for this exception to be read into the POXO Act, Section 63 of BNS. Law Commission की रिपोर्ट कहती है that changing the age of consent, it was against the changing the age of consent. The Law Commission report of 2023, and it said that judicial discretion would be used in these cases between 16 to 18 वाले cases में, यानी कि judges decide करेंगे on a case to case basis. Under POXO and several provisions of IPC and BNS, whoever commits penetrative sexual assault on a child who is anyone below 18 can face stringent punishment under Section 6, Section 9, etc., etc. ठीक है. The High Court said that the age difference should not be more than 5 years to ensure that the girl of an impressionable age is not taken advantage of by an older person.
जिसको आजकल स्लैंग लैंग्वेज में ग्रूमिंग भी कहते हैं. Educating adolescents about the law on sexual offenses is a must. Criminalizing normal adolescent behavior is not the way to protect against non-consensual exploitative offenses. ठीक है. All right. Next up, we have understanding Russia's Taliban gauntlet. This also we'll discuss in detail. It's an interesting article. On the left-hand side, you have again Israel-Palestine related article. The West must follow France in recognizing Palestinian statehood. So basically, France ने recognize कर लिया Palestine को as a state, and ये article argue कर रहा है that बाकी countries को, Western countries को भी ये move follow करना चाहिए. That's pretty much what it is. That summarizes it. और कुछ उसमें सच नया नहीं है. They're saying that given that pressure is the only language Israel appears to understand, and with Trump showing no willingness to apply it, Europe must do more to counter the efforts of Israel, which is being backed by US. Efforts to end the war in which mass killings and devastation is happening is comparable to the 1948 Nakba. Nakba is also sort of like a mass killing. Must be accompanied by initiatives to ensure that such a catastrophe is never repeated. The first step in that direction is recognition of Palestinian independence and statehood. France has promised to join. Most member countries of UN in statehood push also joining. Other nations should also follow. All right, moving ahead. The need for doctor-led innovation. This one you can skip. Not that important. आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हो. Basically talks about how engineers and entrepreneurs are shaping the future of healthcare, while doctors are just serving as service providers and not working towards innovation, not working towards creating new medical solutions, and that has to change. So basically, doctors को entrepreneurs बन जाना चाहिए. सब लोग को entrepreneurs बन जाना चाहिए. Very good. अच्छी बात है. मतलब I don't mean it sarcastically. I agree with this. Bihar's migrants lack SIR documents. ये तो हम already पता है हमें. तो ये जो सर्वे हुआ है वही चीज बता रहा है. The awareness of using online portal for SIR. 75% have not even heard of the online portal. 14% have heard of it but submitted documents offline. 11% heard of it but not submitted documents. And 1% submitted the documents online. Wow. Okay. How is India preparing against GLOF events? GLOF क्या होता है? Glacial Lake Outburst Flood. यानी कि पहले तो ग्लेशियर लेक समझो क्या होता है. दिस इज एन एग्जांपल. जैसे ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, जब मेल्ट होते हैं बिटवीन डिफरेंट माउंटेन्स एंड उससे एक वाटर बॉडी लेक बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अ ग्लेशियर लेक. सिंपल एज दैट. अब जब ग्लेशियर के अराउंड, उस लेक के अराउंड एक बैरियर, आइस का बैरियर है, अगर वो आइस का बैरियर टूटेगा, that means that water would come gushing down with a lot of flow, which can create a flood. So that is what a glacial lake outburst flood is. इंडिया में एक दो बार आ भी चुका है, नेपाल में एक दो बार आ चुका है इस टाइप का फ्लड. आपका जो केदारनाथ वाला डिजास्टर था, that also was sort of in this category. But yeah, let's read the gist of this article. As per India's National Remote Sensing Center, Indian Himalayan region is home to 11 river basins and 28,000 glacial lakes. NDMA has marked accelerated its efforts to manage these risks, and they are moving to a post-disaster response to risk reduction through its Committee on Disaster Risk Reduction. A shift from mere post-disaster response rather. यानी कि disaster होने के बाद respond करें, उससे हम दूर जा रहे हैं, हम पहले से precautions की तरफ जा रहे हैं. One of the critical parameters in this exercise was to encourage Indian technology systems and scientific expertise, one of which is science of SAR इंटरफेरोमेट्री. देख लेते हैं SAR इंटरफेरोमेट्री क्या चीज होती है. यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा. Yeah. The art of analyzing micro changes in slope stability up to a centimeter using remote sensing satellite imagery as high as 10 meter resolution. And अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं ना ज्यादा to identify landslides. Another gap is absence of well-sourced Indian foundations and tech providers in this business of risk reduction. काफी सारे expeditions हमने करे हैं in these hilly states. One such expedition lost its way in bad weather. Had to leave behind a member to not pollute the lake, etc., etc. Okay. So basically, scientific experiments करे जा रहे हैं. They are saying that
we need to increase our technological capabilities, install more systems, and bridge this data gap. In absence of an automated early warning mechanism, the ITBP deployments in high reaches have been oriented towards manual early warning. After monsoon this year, UTs are gearing up for another round of expeditions. All right, cool. Was there a security breach at the crypto exchange CoinDCX? So CoinDCX is a financial intelligence unit registered in the Indian Crypto Exchange, founded in 2018. जुलाई रिसेंटली अभी 10 दिन पहले इन्होंने रिपोर्ट किया $44 million का एक्सपोजर, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच, प्राइवेसी ब्रीच, चोरी, जो भी आप कह लो. एंड द इंसिडेंट वाज कंटेन्ड बाय आइसोलेटिंग द अफेक्टेड अमाउंट. ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको. Not gonna spend a lot of time on this. Nothing important here. Nothing important here. Nothing important here. One liner. Heritage conservationist Tara Murli passes away, known for public causes promoting civic rights, heritage conservation, and environmentalism. She was from Chennai. Okay. No clarity on the grant of citizenship under the Citizenship Amendment Act yet. ठीक है. Okay, nothing important here. ठीक है. Israel to allow daily pauses in Gaza areas to let aid in. The daily 10-hour pause in military operations will be in Al-Masawi, Mawasi, Deir al-Bala and Gaza City. Rescue operations start कर दिए इन लोगों ने, and aid is flowing to prevent diversions by Hamas. Trump confirms deal with the European Union, set 15% export tariffs. देखते हैं कब तक टिकते हैं ये 15% export tariffs. So you can see him shaking hands with Ursula von der Leyen, who is the chief of European Union. 15% tariffs जो है apply होंगे. काफी टाइम से इन लोगों का भी पंगा चल रहा था एक दूसरे पे टैरिफ लगाने. सो फाइनली दिस हैज आल्सो कम टू क्लोज. ओके, व्हाट एल्स? वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल अप्रोच टू एआई रेगुलेशन, सेज यूएन के आईटीयू की हेड डोरीन बोगडान मार्टिन. तो ये इंपॉर्टेंट नाम है आप लोग के लिए. डोरीन बोगडान मार्टिन, हेड ऑफ यूएन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एजेंसी, ITU. ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स? एनीवन? इंडिया ने सक्सेसफुली ड्रॉ करा लिया टेस्ट मैच पिछला वाला. एक्सीलेंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय KL Rahul, Shubman Gill, Washington Sundar, Teja. The last three of them also got centuries. Piastri, Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix. He defeated McLaren teammate Lando Norris. All right, nice. Okay, I think that's all we have for the newspaper for the day. Let's come back to our PPT. We also have a look at the chat box first. क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? कुछ तो अलग ही बातें चल रही हैं, मॉक टेस्ट की बातें चल रही हैं. ओके, cool. Deep Kala is saying we have two pages in Indian Express. The first one is editorial, second one is ideas page. So my question is, do we have to read both the pages? देखो, editorial तो पढ़ना ही पढ़ना है. Second page में अगर आपको लगता है कोई ऐसा relevant topic है which is relevant from a national perspective, from India's perspective, then sure, you can definitely go for it. अगर आपको लगता है कि कोई abstract topics हैं, then you can skip them. ठीक है? Do you want me to check out today's edition? आपको बता देता हूँ. Let me open up today's edition. मेरे पास होगा Indian Express आज का.
I hope you guys can see the screen. This is today's Indian Express. So वही approach रहेगी that you look at the front page important articles. Bihar special road revision, Operation Sindoor, Haridwar Stampede, India drawing the test match, Bustard habitats. ठीक है. This is again city-based and state-based news. When you have government and politics, this you can mostly skip in most cases. Then you have the express network. ठीक है, इसमें आप फिल्टर आउट कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन रीड दैट अप. अब देखो जैसे ये दिस इज रेलिवेंट. इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नियर्स रियलिटी एज द सक्सेसफुली टेस्ट द कोच एट ICF चेन्नई. सो कौन डेवलप कर रहा है इसको? नॉर्दर्न रेलवे जोन डेवलप कर रहा है. What is this project called? Integral Coach Factory. So that is the place which makes it Integral Coach Factory. How will it work? Hydrogen fuel technology. तो इस टाइप के आर्टिकल्स अगर आपको दिखते हैं तो आप पढ़ सकते हो. This is the editorial page. So one is regarding India-UK trade pact. We already discussed that. One is regarding US tariffs with European Union. जो हम देख ही रहे थे न्यूज़पेपर में. Then this is regarding WWF, Hulk Hogan and all of those things. This is optional to read. This is the ICJ verdict on climate obligations. ये भी इंडिया लेवल से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ सकते हो चाहो तो. दिस इज द आइडियाज पेज. विकसित भारत की यहाँ पे बात हुई है 2047. दिस इज एन आर्टिकल बाय स्मृति ईरानी. सो या यू कैन गिव इट अ कैजुअल रीड बट ऑफ कोर्स फ्रॉम अ GK and current affairs perspective it's not that important. This one talks about sedition, prejudice. This one talks about congressmen's lament, introspection of political leaders. So yeah, mostly ideas page पे आपको ideas related articles मिलेंगे. Editorial page आपके लिए ज़्यादा important है as compared to the ideas page. Ideas page पे अगर आपको कुछ relevant दिखता है, you can definitely look at it. ठीक है. बाकी you guys can just have a quick glance over Indian Express and अगर आपको कोई ऐसी news दिखती है जो let's say relevant है, जैसे ये चाइना's mega dam on ब्रह्मपुत्र यहाँ पे explained है अच्छे से, तो ये यू शुड डेफिनेटली रीड, डेफिनेटली गो फॉर इट. ऊपर फ्रंट पेज पे जो आर्टिकल था रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन बस्टर्ड्स, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट, आप कह सकते हो. सो वही बात है यार, देखो 2 न्यूज़पेपर हम करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा. आई कैन नॉट डू इट विद इन 45 minutes to 1 hour. सो दैट्स व्हाई आई चूज द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो तो डेफिनेटली कवर्ड होते हैं. जो ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट वाले होते हैं बट स्टिल रेलेवेंट, वो इंडियन एक्सप्रेस में आपको मिल जाते हैं. श्योर, डेफिनेटली टेक अ कैजुअल ब्राउज ओवर द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एंड देखो अगर आप कुछ सप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट. मैं ये कभी नहीं कहता कि आपने हिंदू एनालिसिस कर लिया तो मतलब आपकी जीके खत्म हो गई. आई हैव नेवर क्लेम दैट इवन वंस, नीदर वुड आई इन फ्यूचर. ठीक है, देयर हैज टू बी अ सप्लीमेंट्री रीडिंग व्हिच यू हैव टू डू ऑन योर ओन एवरी डे टू सप्लीमेंट योर नोट्स टू सी व्हाट आर द अदर रेलेवेंट टॉपिक्स. ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे. Alright, let's start with the first one which is Stampede. तो हमने चलो mostly discuss कर ही लिया. The second one is regarding understanding Russia's Taliban border. तो ये क्या है? अब देखो थोड़े दिन पहले रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा that they are recognizing the Islamic Emirate of Afghanistan, basically the Talibani government, representing the culmination of Russia's recent overtures. Overtures मतलब थोड़ा सा लगाव towards the Taliban. Moscow's eagerness to cultivate diplomatic ties with them is in stark contrast to their approach to IEA's first iteration in 96 to 2001. क्यों? तब तो लेकिन US जो है इतना ज़्यादा involved था ना तालिबान में. At that time, Taliban were seen as hostile towards Russia. Moscow did not acknowledge their government and was forced to wind down its diplomatic presence in Afghanistan in 97. Further, Russia provided military assistance to Northern Alliance and helped its Central Asian Alliance to stabilize the situation along the Afghanistani border. So basically, ऊपर के जो countries हैं आपके कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वो सारे रशिया के काफी ज़्यादा क्लोज हैं and वो रशिया जो है उनको military assistance दे रहा था. And in a balancing act now between the Afghanistani government and Taliban, Russia is increasing its diplomatic efforts to resolve the Afghanistani crisis. Despite being blacklisted by UN and outlawed in Russia, Taliban representatives were invited to Moscow
एंड इंटर अफगान कॉन्फ्रेंसेज हुई, रशिया ने अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी टू एज आउट यूएस फ्रॉम अफगानिस्तान। तब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को इन अगस्त 2021। काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए थे, एंड अब जो है धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है उनकी गवर्नमेंट। इंडिया ने तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर ही दिए तालिबान के साथ। रशियन एम्बेसी ऑपरेशन में थी तब से, एंड नाउ मॉस्को इज कॉन्फिडेंट दैट दे एंड तालिबान आर केपेबल ऑफ पुटिंग थिंग्स इन गुड ऑर्डर। तो अब इनका ये जो रिकग्निशन है, दिस रिफ्लेक्ट्स दैट दे आर नाउ एन ऑब्जेक्टिव एलाई, द ओनली पॉलिटिकल फोर्स केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग पावर इन अफगानिस्तान। दे आर इंसिस्टिंग ऑन सपोर्टिंग तालिबान इंक्लूडिंग आर्मिंग देम, मतलब मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। अब देखने वाली बात है कि कितना दूर तक जाएंगे, कितना। अरे यार, क्लास के टाइम ही मेरे लैपटॉप की बैटरी कैसे खत्म हो जाती है रोज। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो नाउ दे वुड बी सपोर्टिंग देम militarily as well, and it's interesting to see how far they would go to join this fight. Russia has set a precedent by recognizing them. Some Central Asian states and even China may well follow suit, especially given that their expectations, Taliban's expectations of their partners, will certainly increase. Moscow's free pass to Taliban regarding inclusivity of their government, as well as women's and minorities' rights, may become a new template for other players who will prioritize pragmatism, मतलब समझदारी, over value-based approach. अब इसका क्या मतलब है? We all know that Afghanistan is a little repressive in terms of women's rights and minority rights. लेकिन क्या ये countries value-based approach देख रही हैं कि ये हमारी value से align नहीं होता? और they are looking at it practically कि अगर diplomatically हम इनके साथ link हो जाते हैं या इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं तो उससे हमें पॉलिटिकल एडवांटेज क्या मिलेगा, डिप्लोमेटिक एडवांटेज क्या मिलेगा, दूसरे तरीके के क्या क्या इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं इनको ऑयल सप्लाई करके या इनको वेपन सप्लाई करके. So they are moving towards pragmatism rather than a value-based approach. That is what they are saying. India will unlikely be seriously affected by this move. New Delhi तो diplomatic ties जो है धीरे धीरे improve कर ही रहा है. They have found common ground with them on issue of terrorism in Kashmir, and it's likely that New Delhi will keep up diplomatic communication, trade, and humanitarian cooperation with the IEA without deviating from its stance on legitimacy issue. Engagement without formal recognition is still the trajectory India is following. मतलब अभी हमने formally recognize नहीं किया तालिबानी गवर्नमेंट को, लेकिन हम still diplomatically engage कर रहे हैं उनके साथ, और यही आगे की trajectory रहने वाली है. Now, from a location point of view, इंडिया के लिए अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा important है, because पाकिस्तान और ईरान के जस्ट बीच में है अफगानिस्तान. So पाकिस्तान का जो पोर्ट है क्या नाम है उसका, ग्वादार पोर्ट, एंड ईरान का जो पोर्ट है उसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्ट विच वी यूज फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, द ईरानियन पोर्ट विच इज almost like 70 odd kilometers away from the Gwadar port. Can you guys quickly tell me the name in the chat box? Correct, Chabahar port, absolutely right. सो वही है कि वो कनेक्टिविटी परस्पेक्टिव से अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, अनदर गेटवे टू सेंट्रल एशिया अपार्ट फ्रॉम द चाबार पोर्ट, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स ongoing with Taliban. That's what the article more or less says. Now, the last article for the day is clearing the air on citizenship in Bihar poll roll revision. What is this all about? So, citizenship का यहाँ पे discussion है कि citizenship is sort of fundamental. It is fundamental that unless a person is citizen of India, he cannot be a voter or elector, and therefore he cannot become a legislator also, a politician also. Therefore, it is surprising that some seasoned politicians have raised objection to this exercise, SIR exercise, that citizenship should not be verified. It only shows that they have absolutely no knowledge of the constitution. That is what the author says. Article 324 कहता है that election commission would have superintendence, direction and control in the preparation of election roll and conduct of all elections. And ये जो process है, this is a continuous process which is revised from time to time. These are case laws mentioned है, Lakshmi Charan Sen and others versus AKM Hassan Uzzaman and others. This is a case law which talks about this revision of the voter list from time to time, irrespective of there being elections or no elections.
अब आर्टिकल 326 क्या कहता है? वो कहता है दैट इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि 18 साल से जो भी ऊपर का है और इंडिया का सिटीजन है वो वोट डाल सकता है, unless they are otherwise disqualified by constitution or any other law. Therefore, it is clear that unless a person is a citizen of India, he is not entitled to vote. Pursuant to enabling provisions, Parliament enacted the ROPA, or the Representation of People Act of 1950, which deals with preparation of these electoral rolls. We all know that. And बाकी बात करें तो पार्ट 2A ऑफ दिस एक्ट 1950 वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो बात करता है ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन की, जिसमें आपके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आ जाते हैं. फिर पार्ट 2 भी बात करता है इलेक्टोरल रोल्स की फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड पार्ट 3 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Section 15 talks about preparation of electoral rolls, etc., etc. 16 talks about disqualification. 16(1)(a) talks about अगर कोई citizen of India नहीं है, he would be disqualified as a voter. तो ये 15 और 16 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट्स एक बार को चाहो तो रहने दो. और आर्टिकल 15, 16 एंड 16(1)(a), 16(1), 16(2) ये क्या कहते हैं? ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 talks about preparation, 16 talks about disqualification, 16(1) talks about अगर तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एंड 16(2) सेज दैट अगर आपका नाम जो है डिस्क्वालीफाइड है तो अगर आप रजिस्टर्ड वोटर भी हो तब भी आपको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा. ठीक है, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ स्टैटिक जीके पर्सपेक्टिव. That is what is explained in that entire article कि how citizenship works in alignment with this electoral exercise. ठीक है. Now moving to the vocabulary for the day. First word is hogwash. Basically a professional word to say bullshit, as in nonsense. Synonyms are garbage, nuts, rubbish. Antonyms are reasonableness, judgment, and sense. Sentences: his answer was pure hogwash. The next word is fallout. Fallout मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, to express different opinions about something, often angrily. Argue, fight, quarrel, these are synonyms. Accept, agree, assent are antonyms. Both the members start fallout with each other. That is the sentence. The next word is peremptory. Peremptory का मतलब होता है authoritarian, aggressive, commanding. This is different from preemptory. Preemptory मतलब पहले से guess कर लेना कि क्या होगा. Peremptory is different. Preemptory is different. ठीक है, preemptive या preemptory जो भी कह लो. Antonyms are humble, unassuming, or indecisive. Sentences: he started issuing peremptory instructions. Aggressive, authoritarian instructions. Okay, so peremptory means aggressive, commanding. Fallout means ladai chakda, quarrel, argue, difference of opinion, and hogwash means nonsense. And that brings us to the end of today's discussion. Okay, क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? एलेट में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की टिप्स. पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता एलेट में. देखो, आप लोग अभी किस ऑर्डर में अटेम्प्ट कर रहे हो एलेट के पेपर को? हाउ व्हाट इज योर अप्रोच लाइक आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाते हो, या कोई एक सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हो, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन? व्हाट इज योर अप्रोच लाइक? सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग मेंटी क्विज. अच्छा, सोर्स बता दूं मैं आपको, हैं, ताकि आप लोग वहीं से जाके पढ़ लो और आसानी से सारे आंसर के जवाब दे दो और आपको रिवीजन ना करना पड़े. नो, आई एम नॉट गोना रिवील द सोर्सेज. ठीक है, चलो बता देता हूँ. सोर्सेज में मोस्टली आई यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज वेल. मतलब ये जो आपके परप्लेक्सिटी, क्लॉट, जीपीटी वगैरह वो भी मैं यूज करता हूँ. बाकी आई यूज डिफरेंट वेबसाइट्स एज वेल. दृष्टि हो गया, विजन हो गया, अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं. कभी कभी विकीपीडिया से ऑल्सो पिक क्वेश्चन. दीज आर यूजुअली माई सोर्सेज. इसके अलावा आई यूजुअली सर्च फॉर टॉपिक्स विच आई नो आर इम्पॉर्टेंट, एंड उससे रिलेवेंट जो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं उसमें से भी कई बार आई पिक डिटेल्स. दैट्स हाउ आई यूजुअली प्रिपेयर द क्विज. बाकी इफ यू आर गोइंग टू रिवाइज, then I want you guys to revise it in a more comprehensive manner, not just follow these particular sources, क्योंकि 10 सोर्स से आप रिवाइज करने जाओगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, फिल्टर आउट करने में और टाइम लग जाएगा. मुझे तो पता है क्या रेलेवेंट है, बट आपको टाइम लगेगा उसमें. कुछ आगे सिंह एमिटी बदनाम क्यों है यार? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो कोई एमिटी से ही हो जो वो बता सकता है. आई हैव नेवर बीन टू एमिटी, एंड बेसिकली तो मतलब यूजुअली परसेप्शन यही रहता है दैट रिच ब्रैट्स का इंस्टीट्यूट है वो, बट आई डोंट नो, आई एम नो वन टू कमेंट. ना मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी है, ना मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ. ठीक है,
एक और स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, किस चीज पे चाहिए आपको स्ट्रैटेजी वीडियो? डिड नॉट सी योर क्वेश्चन रिगार्डिंग वीडीएस। वीडीएस यार डिस्कस कर लेंगे अलग से। अब क्या बताऊं मैं, वीडीएस में उतना ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। वीडियो में क्या जानना है आपको? व्हाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट वीडीएस, बताओ। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है ये, 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में। क्रिप्टो करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन्स, वीडीएस, 30% इन पर टैक्स लगता है। जितने भी आपके क्रिप्टो हो गए, एनएफटी हो गए, वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दीज आर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। 30% टैक्स है, दैट्स इट। इसमें और क्या बताऊं मैं आपको वीडीएस में, बताऊं। इंग्लिश एंड जीके, उसके बाद AR then CR, English then आधा GK, then start with English section, then LR section, half LR, then GK, remaining. Yes, it's decentralized, but it's not legalized. देखो, legalized है या नहीं, that's depends on what is the question you are asking. Are you asking whether cryptocurrency is a legal tender in India? The answer is no. Are you asking whether cryptocurrency is illegal in India? Again, the answer is no. It's recognized, but it's not legalized as a legal tender. And legalize आप उसको centralize तो कर ही नहीं सकते ना, because it's based on the blockchain network, so it can never be centralized. It will always be decentralized. It's regulated, yes. It's legal, no. ठीक है? So that is the distinction. Okay. Yeah, you can say that. Gojo is absolutely right. मतलब जिनके पास एमिटी जितना पैसा है उनको नहीं फर्क पड़ता लोग क्या कहते हैं एमिटी के बारे में। किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट, एलेट, स्लैट, ठीक है। एलेट मॉक के अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन, यही देखो यार। अनदर अप्रोच विच यू गाइस कैन ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट फॉर एलेट इज, वी ऑल नो दैट एलेट इज अ, छींक आ रही है मुझे, अबाउट टू स्नीज, आ रही है लेकिन नहीं आ रही है। But yeah, ALET is a very time-intensive competitive exam, and you have to be very, very strategic about your time. So, couple of things which you want to keep in mind. One is time yourself section-wise. देखो किस section में आपका ज़्यादा time जा रहा है, किस section में कम time जा रहा है. Keep a timer or a clock nearby, and try to note that down, and try to put yourself under certain time limits and time boundations. कि ये section में मुझे उतना time नहीं लगेगा. That is if you are going by the section वाली approach. If you are navigating between different sections, या फिर doing the paper in rounds, which is what I personally used to do. I'm not recommending this strategy. You can try it if you want to. But what I did was I browsed through the entire paper, did all the easy questions first से लेके last तक, then did all the medium difficulty questions, and last में did all the difficult या फिर जो मुझसे first attempt में मुझे समझ नहीं आ रहे थे या difficult लग रहे थे. That is how I went about the paper in ALET. So उससे फायदा ये होता है कि देखो हर question के equal marks है ना. अब आपने सारे इजी वाले कर लिए सबसे पहले, तो आपको ये रिग्रेट कभी नहीं होगा कि यार ये इजी वाले क्वेश्चंस मिस हो गए बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट. सो यू मैनेज योर टाइम इन सच अ वे दैट यू ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट, देन यू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लगाऊंगा तो बन जाएंगे, या लगाऊंगी तो बन जाएंगे, या फिर एक सेकेंड चांस लेंगे तो बन जाएंगे, या फिर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो उस तरीके से बन जाएंगे. That should be your second round of attempt. Third round of attempt could be the ones which you could not crack or which seem complex, seem complicated. That is one approach you can look at. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये golden approach है, इससे सारे हल हो जाएंगे आपके problem. But yeah, that is one approach. Second approach is timing yourself section wise. Third thing which you have to keep in mind is don't tie your ego to any particular question. कई बार हमें लगता है कि यार ये question हमने प्रैक्टिस किया है, ये टॉपिक हमें बहुत कॉन्फिडेंटली आता है, बट मॉक में आपका क्वेश्चन इस तरीके का आता है दैट इट इज कंफ्यूजिंग, टाइम टेकिंग, एंड वी सॉर्ट ऑफ टेक इट ऑन आवर ईगो कि ये वाला तो करके ही रहूंगा बिकॉज दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सूट. ठीक है, श्योर इट इज, बट यू हैव टू कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स दैट एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, इक्वल वेटेज. तो हर क्वेश्चन पे आपको आपके दिमाग में एक टाइमर चलते रहना चाहिए कि 40 सेकंड्स हो गए, अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. Whether I will be able to solve this question in the next 10-15 seconds? If yes, then I'll spend those 15 odd seconds on it. If no, then I'll come back to it again. ठीक है, so आपको थोड़ा सा ना वो डेयरिंग लाना पड़ेगा अपने अंदर क्वेश्चन छोड़ने का. छोड़ने की टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलेट में, अटेम्प्ट करने की टेक्निक से भी ज्यादा, कि कौन से क्वेश्चन फटाफट आपको छोड़ देने हैं और फिर उन पे वापस आना. दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग टाइम इन एलेट. तो ये 2-3 चीजें आप करके देखो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मॉक्स, and then tell me how it works out for you.
प्रियांशी ब्रेक डाउन यार सबके लिए अलग होगा बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू गिव यू अ नंबर बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू और गिव यू दैट लीवे. हो सकता है कोई बंदा इंग्लिश में स्ट्रांग हो, वो इंग्लिश सेक्शन 25 मिनट में कर लेता हो, 30 मिनट में कर लेता हो. मैं उसको बोलूँ कि 35 मिनट ले लो इंग्लिश के लिए, वो कहे सर ने तो बोला 35 मिनट सर ओके, तो मैं उसकी एफिशिएंसी खराब कर दूंगा. ऑन द अदर हैंड कोई जो है अच्छा नहीं है इंग्लिश में और मैं उसको बोलूँ 25 मिनट्स में करना है और उसको अभी 35 लग रहे हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दूंगा. तो आई डोंट वांट टू कंपार्टमेंटलाइज यू इनटू टाइम लिमिट्स. डिसाइड दैट फॉर योरसेल्फ. यू गाइस आर स्मार्ट इनफ एंड आप लोगों ने 8-10 मार्क्स दे दिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. उसके बेसिस पे ड्रॉ अ फेयर आइडिया कि यार दिस इज द आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम, कि मैं इतना इतना अगर सेव कर लूंगा हर सेक्शन में. अभी आपको पता है ना कि आप कितने मिनट से शॉर्टफॉल कर रहे हो. जैसे आप कह रहे हो कि आप 10 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं या फिर 15 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, मतलब आपको लगभग 10 से 12 मिनट और स्क्वीज आउट करना है. तो देखो वो 10-12 मिनट कहाँ से स्क्वीज आउट हो सकते हैं. क्या 5 मिनट लॉजिकल सेक्शन से स्क्वीज हो सकते हैं, क्या 5 जीके से आ सकते हैं, 5 लॉजिकल से आ सकते हैं. यू हैव टू डिवाइड दैट रेशियो बेस्ड ऑन व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है. आई कैन ओनली गिव यू अ फ्रेमवर्क, आई कैन नॉट गिव यू स्पेसिफिक टू द पॉइंट नंबर्स, क्योंकि वो फिर अनफेयर होगा, वो एप्लीकेबल टू ऑल नहीं होगा. आई होप यू गाइस गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डज दैट मेक सेंस? यस और नो? Yes. Yes or no? मित्रों कुछ जवाब तो दो, कुछ समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं आपको? ओके चलो ठीक है. यस यस आ गए जवाब. Alright, so that's all for today's session, I guess. We'll meet tomorrow with another session and with the quiz on current affairs for the month of February. So come prepared, and I'll see you all tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Good night. Signing off. It's time for dinner. Bye.